Assalamu alaikum and welcome back. Today we are studying The School for Scandal. So, School for Scandal is a comedy of manner written by Richard Brinsley Sheridan. So, this is Comedy of Manner, and in Comedy of Manner, as we know, that it talks about the follies of upper class society. It usually includes couples who are having love relations. It has pun. It has somewhat language which is having some kind of vulgarity included. Moreover, there is a frequent shifting sometimes from town to village and village to town. And there is sometimes some confusion that is there within a play, the confusion of faces, similar faces, of names, of situation, of love relations. So this is basically a comic satire on the upper class society. So this play also is having these themes included. The School for Scandal begins in the dressing room of Lady Snareswell, a wealthy widow with a penchant for plotting and spreading rumors. Lady Snareswell has hired Snake to forge letters for her and place false stories in the gossip columns. They discuss her plot to stop Charles Surface, whom she loves, from becoming engaged to the hairless Maria. Lady Snareswell is conspiring with Charles' older brother Joseph, who has a reputation for goodness but is really a selfish hypocrite and liar, and who wants to marry Maria for her money. Snake departs, and a group of gossip mongers, including Joseph, Mrs. Candor, Sir Benjamin Backbite, and Mr. Crabtree. So they congregate at Lady Snareswell's house. Maya is also there, but she rushes the room in distress when the others gossip about Charles' enormous debts and financial misfortunes. सो लेडी स्नेयरवेल जो है वो एक अपर क्लास वेल्दी विडो है और उसकी आदत है कि वो प्लॉटिंग करती है, रूमर्स फैलाती है, प्लान करती है और स्नेक जो कि उसका एक फ्रेंड है, सर्वेंट है, वो उसको इसमें हेल्प करता है. तो इसमें जो नेम लिखे हुए हैं लाइक स्नेयरिंग होने से स्नेयरवेल, स्नेक जो है बड़ा एक सटल किस्म का एनिमल है, चालाक किस्म का एक स्पीशीज़ है, उस वाले से उसका नाम स्नेक. फिर मिस्टर बैकबाइट जो कि बैकबाइटिंग के हवाले से. सो ये बेसिकली नाम जो है वो भी इन लोगों की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ये बेसिकली अब क्या डिस्कस कर रहे हैं स्नेयरवेल और स्नेक के चार्ल्स सरफेस जो कि एक अपरेंटली बड़ा एक दिखाया गया कि सब कुछ ख़त्म कर चुका है, सब कुछ लूज़ कर चुका है और उसके पास कुछ भी नहीं है. वो प्यार करता है मारिया से और मारिया उससे प्यार करती है. सो मारिया जो है उसके पास दौलत है और वो आपस में इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं. चार्ल्स सरफेस को दौलत से वो लेना देना नहीं है. लेडी स्नेयरवेल चार्ल्स के बड़े भाई जोसेफ के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रही है जो कि अपरेंटली तो अच्छा है लेकिन उसके अंदर हिपोक्रेसी है, झूठ बोलता है और वो मारिया से उसके पैसे के लिए शादी करना चाहता है. सो दोनों भाई मारिया से शादी करना चाहते हैं और जो बड़ा भाई है वो उसको अपने छोटे भाई को अंडरमाइन करके उसकी जगह लेना चाह रहा है. मीनवाइल स्नेक जाता है तो गॉसिप मॉन्गर्स, बहुत सारे लोग जो कि फजूल बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, जिसमें जोसेफ है, कैंडर है, बेंजामिन है, क्रैबट्री है, ये सारे स्नेयरवेल, लेडी स्नेयरवेल के घर इकट्ठे होते हैं. तो मारिया भी वहाँ पे होती है. तो ये जान के गॉसिप्स करते हैं चार्ल्स के नॉर्मस डेट्स की कि उसने बहुत कर्जा लिया हुआ है, वो डूबा हुआ है उसके अंदर. तो वो डिस्ट्रेस फील करती है और वो उस रूम को छोड़ देती है. The next scene introduces Sir Peter Teazle and his confidant Mr. Roley. Sir Peter has lived all his life as bachelor, but 7 months ago married a much younger woman. He and Lady Teazle fight all the time, and Sir Peter is sure his wife is always to blame. He complains of the bad influence that the Lady Snareswell has on his wife. He is also upset because Maria, who is his ward, does not want to marry Joseph. Sir Peter, who served for some time as a guardian to the Surface brothers, is convinced that Joseph is an exemplary man with strong morals.
and he believes that Charles is not only badly behaved but also bad deep down. Roley disagrees. He thinks Charles is wild but will grow up into good man. Roley delivers the news that Sir Peter's old friend Sir Oliver Surface has arrived back in England after 16 years in East Indies. So यहाँ पे सर पीटर थीजल एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और उनके साथ उनका एक ट्रस्टेड बंदा मिस्टर रॉली. सो पीटर ने सारी उम्र बैचलर बन के गुजारी, लेकिन 7 मंथ्स अगो उन्होंने बिलाखिर शादी कर ली. यानी पन्नी उन्हें क्या पड़ी थी कि आखिर उम्र आके वो जब कब्र में टांगे थी तो उन्होंने शादी कर ली और एक जवान लड़की से. अब टीजल और लेडी टीजल हमेशा लड़ते रहते हैं और टीजल हमेशा ब्लेम अपनी वाइफ पे देता है और वो कहता है कि लेडी स्नेयरवेल जो है जिसका शुरू में जिक्र आया, उसने उसकी वाइफ को बैड इन्फ्लुएंस दिया, ख़राब किया, उसकी वजह से इसकी आदतें ख़राब हुई. और वो इस वजह से भी अपसेट है कि जो मारिया है जो हेयरलेस है और इनकी वार्ड है, ये उसके वार्डन है, तो वो जोसेफ से शादी नहीं करना चाहती. तो सर पीटर के मुताबिक जो सर्फेस ब्रदर्स में से जोसेफ सर्फेस अच्छा है और चार्ल्स सर्फेस बुरा है, उसकी आदतें भी ख़राब हैं, बिहेवियर भी ख़राब है. जो उनका फ्रेंड है रोले, ट्रस्टेड फ्रेंड, वो डिसएग्री करता है और वो मानता है कि चार्ल्स कभी ना कभी एक अच्छा इंसान बनेगा. मीनवाइल रोले इज ऑल्सो गिविंग अ न्यूज़ के सर पीटर का जो पुराना फ्रेंड था सर ओलिवर सर्फेस, वो इंग्लैंड वापस आ रहा है 16 years के बाद फ्रॉम ईस्ट इंडीज. The second act begins with a quarrel between the Teazles in their home. Lady Teazle wants large sums of money to buy luxury goods. Sir Peter reminds her that she grew up simply and lived with none of the things she now says she needs. Lady Teazle says she remembers that boring life well. After his wife leaves, Sir Peter marvels at how attractive she is when she argues with him. So दूसरा एक्ट शुरू होता है टीजल्स मिस्टर एंड मिसेस टीजल की आपस की फाइट पे, एक क्वारल पे. तो उस क्वारल में यह है कि लेडी टीजल बहुत ज़्यादा रकम का मुतालबा करती है ताकि वो एक लग्जूरियस लाइफ गुजारे, अच्छी चीज़ें लें अपने लिए. सर पीटर उसे हमेशा रिमाइंड कराता है उसके हम्बल ओरिजिन का कि उसने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें यूज़ नहीं की लग्जूरियस, तो फिर अब क्या ज़रूरत है इतनी, अब लड़ क्यों रही है. सो लेडी टीजल कहती है कि उसे अपनी शी रिमेंबर्स हर बोरिंग लाइफ, उसे वो अच्छी तरह याद है, उसे याद कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब उसे ये चीज़ें चाहिए. सो इस तकरार के बाद वो चली जाती है. सो पीटर जो है वो उसकी ब्यूटी को देख के हैरान होता है कि कितनी प्यारी लगती है वो झगड़ते हुए भी. सो इसमें समवट उसका बड़ा डोमिनेंट एटीट्यूड है मिसेस टीजल का, क्योंकि उसके पास एज है खूबसूरत होने का, यंग होने का, जिसका वो फ़ायदा उठाती है. At Lady Snailwell's, the gossip mongers, which now include Teazles as well, they're laughing at their acquaintances' appearance and their misfortunes. Maria and Sir Peter find the gossip appalling, while Lady Teazle joins in with the others in making jokes at others' expenses. Away from the others, Joseph tries to convince Maria to consider him as a potential husband, but she refuses. Although she says she knows from all she has heard that Charles is not fit to marry her, she will not consider marrying his brother. Lady Teazle, who has been considering taking Joseph as a lover, enters the room to find Joseph on his knees in front of Maria. She makes an excuse and, after Lady Teazle sends Maria from the room, begins to try to seduce Lady Teazle, but she is not sure whether to trust his explanation of what she saw. सो यहाँ पे वही गॉसिप मॉन्गर्स जिसके अंदर अब टीजल्स भी आ चुके हैं, मिस्टर एंड मिसेस टीजल. सो वो अपने कुछ जानने वालों की अपीयरेंस पे, मिसफॉर्चून पे हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं. सो मारिया और सर पीटर को ये गॉसिप बड़ी फजूल लग रही होती है, लेकिन लेडी टीजल बड़ी खुशी से इसको ज्वाइन करती है. अब यहाँ पे जोसेफ जो है वो एक साइड पे मारिया को कन्विंस कर रहा होता है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देती है उसको. और वो ये कहती है कि उसने सुना है कि चार्ल्स अगर उसके काबिल नहीं है तो वो फिर उसके भाई से भी शादी नहीं करेगी. अब लेडी टीजल जो कि जोसेफ से प्यार करती है और वो उसको देखने के लिए कमरे में आती है, तो वो देखती है कि वो अपने घुटनों पे झुका मारिया को जो है उसको उसके सामने झुका हुआ है, उसको प्यार का इजहार कर रहा है. सो वो एक्सक्यूज़ करता है और लेडी टीजल जब मारिया को कमरे से भेज देती है तो वो फिर लेडी टीजल को सेड्यूस करना शुरू कर देता है. सो एक अपर क्लास की दिखाई गई है हमें कि बहुत ज़्यादा दिल फेंक हैं और जहाँ पे दिल आ जाए वहाँ पे लाइक
टॉय शॉप जो है उनके हार्ट की, दैट इज़ ऑलवेज शिफ्टिंग. सो लेडी टीजल कहती है कि उसे ट्रस्ट नहीं है कि वो इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करे कि जो उसने देखा कि वो पहले उसके सामने झुका हुआ था, अब वो इसको seduce कर रहा है. सो we come to know about this disloyalty and this flirtatious attitude of upper class society. Rowley brings Sir Oliver to see Sir Peter's house. They rejoice at being reunited, and Sir Peter gives Sir Oliver his impressions of Joseph and Charles, who are his nephews and potential heirs. Sir Oliver thinks that the description of Joseph that the Sir Peter gives is too good to be true. Sir Oliver hatches a plot to test his nephew's characters and choose an heir. When Sir Oliver left the country, Charles and Joseph were too young to now remember what he looks like, and Sir Oliver plans to use this fact to test them. He plans to go to Charles, disguised as a moneylender named Mr. Premium, to see how extravagant Charles really is. To test Joseph's alleged morality, he plans to visit his old nephew in the guise of a poor relative who needs charity named Mr. Stanley. So रोले जो है वो सर ओलिवर को सर पीटर के घर पे लेके आता है. बहुत अरसे बाद ये यूनाइट होते हैं. इस पे हंसी मजाक भी होता है. वो उसकी शादी के बारे में भी पूछता है. उसको ये भी इम्प्रेशन जाता है कि सर पीटर उसका अपनी वाइफ के ऊपर कोई काबू नहीं है. सो सर पीटर बड़ी तारीफ़ें करता है जोसेफ सर्विस की, लेकिन चार्ल्स की बुराई करता है, जो कि सर ओलिवर के हेयर्स हैं. उसकी जायदाद इनके पास जाएगी क्योंकि वो उसके भतीजे भांजे लगते हैं. सर ओलिवर को लगता है कि जोसेफ की डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी दी जा रही है वो शायद इतना अच्छा नहीं है. सो वो एक प्लान करता है. प्लान करता है कि वो चार्ल्स के पास जाएगा, और वो चूँकि बचपन में उन्हें मिले थे ये दोनों बच्चे सरफेस ब्रदर्स, तो वो उनको याद नहीं है उनके अंकल. तो वो डिस्गाइज में जाएगा, एक मनी लेंडर बन के जाएगा चार्ल्स के पास, मिस्टर प्रीमियम बन के कि देखिए वो कितना फजूल खर्च है, और एक पुअर मिस्टर स्टैनले बन के जाएगा, एक रिलेटिव, ताकि वो देखे कि उसका बड़ा भाई यानी चार्ल्स का बड़ा भाई जोसेफ कितने पानी में. Roley introduces Sir Oliver to Moses, a Jewish moneylender, who will accompany him to see Charles, and the two men leave to call on Charles. Left alone, Sir Peter immediately gets to an argument with Maria, who says that she will not obey his command to marry Joseph. Maria runs from the room and Lady Teazle enters. Sir Peter proposes that they should stop their quarrelling, and his wife agrees. But when he tells her that she was always the one to start the fights in the past, they begin to fight again. Sir Peter accuses Lady Teazle of having an affair with Charles Surface, a rumor that Snake and Lady Snaresville have been spreading. She indignantly denies this and leaves. Sir Peter is infuriated, especially because Lady Teazle now loses her temper when they fight. So रोले सर ओलिवर को मोसेस, जो कि एक ज्यूश मनी लेंडर है, उससे मिलवाता है, जिसके साथ वो जाएंगे चार्ल्स को मिलने के लिए, और फिर वो चले जाते हैं. पीछे जब सर पीटर रह जाता है तो वो आर्गुमेंट करता है मारिया से उसकी शादी के बारे में, जो कि जोसेफ से होनी है, और मारिया इसको डिनाई करते हुए निकल जाती है. मीनवाइल लेडी टीजल आती है और वो समझौता करते हैं कि हम नहीं क्वारल करेंगे, लेकिन वो फिर क्वारल करते हैं जब सर पीटर कहता है कि हमेशा लड़ाई तुम शुरू करती हो. फिर सर पीटर उससे एक्यूज भी करता है कि तुम्हारा अफेयर चार्ल्स सरफेस से चल रहा है, हालांकि इनफैक्ट उसका किसी हद तक अफेयर जोसेफ सरफेस से चल रहा होता है. तो ये न्यूज़ बेसिकली चार्ल्स सरफेस वाली लेडी स्नेयरविल और स्नेक ने स्प्रेड की होती है, क्योंकि दे आर बेस्ट एट इट. वो इसे डिनाई करती है और चली जाती है. सो सर पीटर को बड़ा गुस्सा आता है कि जब भी कोई आर्गुमेंट होता है ये बड़ा आराम से मुझे झुटला के और मुझे मेरे मुंह पे बात मार के चली जाती है, वो अपना टेम्पर लूज़ नहीं करती. तो वो बेसिकली उसे इस काबिल नहीं समझती, वो आराम से अपनी बात कहती है और निकल जाती है. Sir Oliver, pretending to be Mr. Premium, arrives at Moses at Charles' house, where Charles is drinking and playing cards with his friends. Charles appeals to Mr. Premium for money, explaining that although he has sold off all his property, he expects to be here a fabulously rich person, Mr. Oliver. Charles suggests that Mr. Premium can collect the debt when Sir Oliver dies. Mr. Premium presses Charles for other collateral,
and Charles suggests that he can sell him the family portraits. Inwardly, Sir Oliver is shocked at disrespect that is shown to the family tradition, but he bids for the portraits and it is more or less an auction. As auction nears its end, Sir Oliver asks if Charles will sell him the specific portrait. So Charles refuses. He says that this portrait is of his generous benefactor, Sir Oliver. Touched, Sir Oliver inwardly forgives Charles for being so extravagant. So सर ओलिवर जो कि मिस्टर प्रीमियम बन के वहाँ पे पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि चार्ल्स ड्रिंकिंग कर रहा है, कार्ड्स खेल रहा है दोस्तों के साथ, तो एक्स्ट्रावेगेंसी शो हो रही है वहाँ पे. तो वो उससे चार्ल्स मिस्टर प्रीमियम जो है उनसे अपील करता है पैसों की, और वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी चली गई है, और जब उनका जो जिनका वो हेयर बन रहा है सर ओलिवर, जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद वो उनका कर्जा चुकाने के काबिल हो जाएगा. सो मिस्टर प्रीमियम जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली पोर्ट्रेट सेल करता हूँ, इसकी ऑक्शन करा लेते हैं. सो उससे पहले तो बड़ा गुस्सा आता है ओलिवर को ये देखते हुए कि अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को सेल कर रहा है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स जब ऑक्शन करीब होती है तो उसे कहता है कि एक स्पेसिफिक पोर्ट्रेट जो है वो मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये मेरे अंकल सर ओलिवर की है जो मेरे बेनिफेक्टर हैं. तो सर ओलिवर को बड़ा प्यार आता है इस बात पे, और वो उसको माफ़ कर देते हैं उसकी सारी गलतियों को, इस वजह से कि उसने उस एक पोर्ट्रेट जो कि सर ओलिवर की थी उससे अपनी मोहब्बत और अपनी वाबस्तगी का इजहार किया. In the next scene, Lady Teazle arrives late for a date with Joseph at his house. She complains about her fight with Sir Peter, but is still unsure whether she wants to commit adultery with Joseph or not. Sir Peter arrives and, terrified of being discovered, Lady Teazle hides behind a screen in Joseph's room as Sir Peter makes his way up the stairs. Sir Peter confides in Joseph that he is worried his wife is having an affair with Charles, but that he has plans to soon give her financial independence from him, which he hopes will ease the fights. Sir Peter begins to talk to Joseph about his desire to marry Maria, but Joseph tries to stop him, not wanting Lady Teazle to learn that he is courting Maria too. At this moment, Charles arrives. Sir Peter says that he will eavesdrop on the brothers to discover the truth about Charles and his wife. Sir Peter tries to hide behind the screen, but Joseph stops him, explaining that he already has a lover hiding there. Sir Peter hides in a closet instead. So अगले ही सीन में लेडी टीजल जिसने मिलना होता है, यानी इट इज़ काइंड ऑफ डेट जो कि जोसेफ के साथ होती है, तो उसके घर थोड़ा लेट आती है. वो उसे बताती है कि पीटर से उसकी लड़ाई हुई, और लेकिन स्टिल वो श्योर नहीं है कि वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रखे या ना रखे, यानी जोसेफ के साथ. सो मीनवाइल सर पीटर भी आ जाता है, और उसकी यानी जो हस्बैंड आ गया तो उसको देखते हुए लेडी टीजल डर के स्क्रीन के पीछे छुप जाती है. सो सर पीटर जो है वो जोसेफ को कॉन्फिडेंस में लेके कहता है कि उसकी वाइफ का चार्ल्स के साथ अफेयर चल रहा है. तो मीनवाइल सर पीटर उससे बात करना शुरू करता है मारिया के बारे में कि जोसेफ ने मारिया से शादी करनी है, और जोसेफ जो है वो सर पीटर को रोकता है कि ये बात ना करे, क्योंकि लेडी टीजल को पता चल जाएगा कि ये मारिया के साथ भी कोर्टिंग कर रहा है, उसको भी फ्लर्ट कर रहा है या उसके साथ भी अटैच है. मीनवाइल चार्ल्स भी आ जाता है. सो सर पीटर कहता है कि मैं छुप के बातें सुनूंगा दोनों भाइयों की, कि देखते हैं कि चार्ल्स उसकी वाइफ के बारे में क्या बात करता है. तो सर पीटर स्क्रीन के पीछे जाने की कोशिश करता है, तो जोसेफ रोकता है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी उसकी वाइफ लेडी टीजल है. तो वो कहता है कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरी लवर है, तो तुम ऐसा करो क्लोजेट में चले जाओ. सो वो क्लोजेट के अंदर छुप जाता है. Charles enters and Joseph asks him about Lady Teazle. Charles denies any involvement with Lady Teazle and begins to say that he believed Joseph and Lady Teazle were the one having an affair. Joseph stops Charles by telling him Sir Peter is listening. So Peter comes out and tells Charles he is very relieved. Joseph leaves the room for a moment and Sir Peter tells Charles that his brother has a woman hidden in the room. As Joseph returns to the room, the screen is pulled down to reveal Lady Teazle. Although Joseph tries to explain Lady Teazle's presence there, Lady Teazle tells her husband the truth. She was considering having an affair with Joseph, who she now understands is a liar and hypocrite. She says that even if she had not been discovered, she would have changed her treatment of Sir Peter after hearing how kindly he spoke about her.
तो चार्ल्स आता है और वो और जोसेफ बात करते हैं लेडी टीजल के बारे में। तो चार्ल्स डिनाई करता है कि मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं है, बल्कि कहता है कि उसका अफेयर तो तुम्हारे साथ चल रहा है ऑलरेडी। सो जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है कि ना कहो ऐसे, सर पीटर सुन रहा है। सो सर पीटर बाहर आ जाता है और उसका चार्ल्स पे से शक उठ जाता है। जोसेफ घबरा के रूम से बाहर जाता है और सर पीटर चार्ल्स को बताता है कि इस कमरे में जोसेफ ने ऑलरेडी खातून को छुपाया हुआ है। सो जोसेफ जब वापस आता है तो स्क्रीन हटाई जाती है और लेडी टीजल सामने आती है। तो बड़ी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है सर पीटर के लिए, जोसेफ के लिए और लेडी टीजल टीजल के लिए। सो लेडी टीजल बयान करती है कि वो सोच रही थी जोसेफ के साथ अफेयर करना, बट उसे पता लग गया कि वो झूठा है, हिपोक्रेट है। लेकिन वो ये भी कहती है कि अगर वो डिस्कवर ना भी होती तो उसको जब पीटर बात कर रहा था जोसेफ से, तो उसने उसे कहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको खुश रखूँ, इसको सब कुछ दूँ, दौलत वगैरह। तो वो कहती तुमने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें की, तो मैं अब तुम्हारे साथ काइंड ट्रीटमेंट रखूँगी, तुम्हारे साथ अच्छी वाइफ बन के रहूँगी। Soon after Teasel's leave, Joseph is visited by Sir Oliver, who pretends to be a poor relative named Mr. Stanley. Joseph speaks politely and eloquently about charity, but he tells Mr. Stanley that he has no money to give and that the rumors that his uncle sends large sums of money are false. Under his breath, Sir Oliver says that Charles will be his heir. After Sir Oliver leaves, Roley arrives to tell Joseph that his uncle has returned from the Indies and that he will bring him to Joseph's house soon to see him. Joseph curses the bad timing of his uncle's arrival. सो टीजल्स के जाने के बाद जोसेफ के पास सर ओलिवर आते हैं, जो कि एक भेस में है, एक गरीब रिलेटिव स्टैनले के नाम पे। सो जोसेफ उनके साथ एक अच्छे पोलाइट मैनर में बात करता है, लेकिन डिनाई करता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, और वो ये भी डिनाई करता है कि उसको उसके अंकल कोई पैसे नहीं भेजते। तो सर ओलिवर को होता है कि ये बहुत ज़्यादा इसने यानी इनग्रैटिट्यूड का मुजाहरा किया, नाशुक्री का मुजाहरा किया। तो वो ठान लेते हैं कि मैं चार्ल्स को अपना हेयर बनाऊंगा, तो चार्ल्स वारिस बनेगा। मीनवाइल रोले आता है और बताता है कि तुम्हारे अंकल आ चुके हैं और वो तुमसे मिलने आ रहे हैं। और जोसेफ को गुस्सा आता है कि ये अच्छी यानी टाइमिंग नहीं बनी अंकल के इस मौके पे यहाँ पे आने की, तो ये कोई अच्छा मौका नहीं है उन्हें रिसीव करने का। At Sir Peter's house, the ghostmongers have gathered to try to find out what really happened between Teasels. The servant refuses them entry, so they stand in the anteroom arguing about the real story is. Some believe that Sir Peter caught Lady Teasel with Charles, while others allege that it was Joseph. They also report that Sir Peter was wounded in a duel fight with the wife-stealing surface brother. But there is no consensus about whether swords or pistols were used in the fight. Sir Peter then walks in unharmed and shouts for the ridiculous gossips to leave his house. Roley and Sir Oliver arrive to tell Sir Peter to come to Joseph's house for the meeting between the Surface brothers and Sir Oliver. Roley pleads Lady Teasel's case, saying that he spoke to her and she feels terrible for the pain and embarrassment she caused him. Upon Roley's urging, Sir Peter decides to reconcile with Lady Teasel. सर पीटर के घर पे गॉसिप मॉन्गर्स ऑलरेडी आ चुके होते हैं और वो वहाँ पे बातें कर रहे हैं कि क्या बनी इन दोनों के दरमियान में। हालांकि सर्वेंट्स उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे, वो एंटी रूम में ही होते हैं। तो वो कुछ बिलीव करते हैं कि लेडी टीजल जो है वो चार्ल्स के साथ पकड़ी गई, कुछ कहते हैं कि जोसेफ के साथ, कुछ कहते हैं कि सरफिस ब्रदर यानी जोसेफ ने उनको वूंड कर दिया ड्यूल में, अब तलवारें यूज़ हुई या पिस्टल्स यूज़ हुए। सो मीनवाइल पीटर अपेयर होता है और वो उनको वहाँ से भगा देता है। सो रोले और ओलिवर वहाँ पे पहुँचते हैं और दे टेल अबाउट द मीटिंग ऑफ सरफेस ब्रदर्स विद सर ओलिवर। सो रोले जो है वो उसमें मिस लेडी टीजल का केस भी प्लीड करता है कि वो शर्मिंदा है अपने बिहेवियर पे, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो सर पीटर माफ़ करने का और उसके साथ रिकन्सिलेशन का सोच लेता है। At Joseph's house, Lady Snavel complains that Joseph ruined her chance to disrupt Charles and Maria's engagement by getting caught pursuing Lady Teasel. Joseph tells Lady Snavel she may still have a chance with Charles because Snake has forged letters that suggest Charles has pledged to marry Lady Snavel, which would also ruin Charles' chances with Maria. Sir Oliver and Charles arrive,
and Lady Snavel hides in the next room. The brothers wish to make a good impression on Sir Oliver and try to force the man they believe to be Mr. Premium or Mr. Stanley from the room, fearing what he will say to their uncle about their behavior. सो जोसेफ के घर पे लेडी स्नेवेल होती है, वो कंप्लेन करती है कि जोसेफ ने चार्ल्स और मारिया की जो एंगेजमेंट ख़त्म हो सकती थी उस चांस को ख़त्म कर दिया अपने और लेडी टीजल के उस इंसिडेंट की वजह से। सो जोसेफ बताता है कि स्टिल अभी चांसेस हैं क्योंकि स्नेक ने जो लेटर फोर्ज किए हैं, यानी जो नकली लेटर्स बनाए हैं चार्ल्स की तरफ से, उससे ये पता चलता है कि चार्ल्स जो है लेडी स्नेवेल में इंटरेस्टेड है। सो इस तरह मारिया उससे शादी नहीं करेगी। सर ओलिवर और चार्ल्स आते हैं और लेडी स्नेवेल अगले कमरे में छुप जाती है। सो जो दोनों भाई हैं वो एक अच्छा इम्प्रेशन डालते हैं उन अपने अंकल के ऊपर, और उन्हें यह होता है कि जो मिस्टर प्रीमियम है और वो जो फोर उस बंदे को, यानी जिसको वो मिस्टर प्रीमियम समझ रहे हैं और एक जो उसको मिस्टर स्टैनले समझ रहा है, वो कहते हैं कि इनको हम निकाल देते हैं यहाँ से क्योंकि यानी इनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इनके बिहेवियर की वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, वो अंकल को शायद कुछ बता ना दे। Sir Peter, Lady Teazle, Rowley and Maria arrive, and Teazle's reveal to the Surface brothers that the man they are throwing out of their house is their Uncle Oliver. Joseph tries to make excuses for his behavior, but Charles only apologizes for having disrespected the family by selling the portraits. Sir Oliver tells Charles he forgives him and everything what he did, whereas Joseph that he sees through his hypocrisy. Lady Teazle suggests that Charles may also be interested in gaining Maria's forgiveness, but Maria says that she knows he is already engaged to another. Charles is dumbfounded. Lady Snavel emerges from hiding to claim that Charles is engaged to her, but Roley summons Snake, who reveals that he was paid to forge letters for Lady Snavel, but paid double to reveal the truth to Roley. Lady Snavel storms from the room in frustration, and Joseph follows. The play ends with an engagement between Maria and Charles, who will be his uncle's sole heir. So, एंड में क्या होता है कि सर पीटर, लेडी टीजल, रोले और मारिया ये वहाँ पे पहुँचते हैं जोसेफ के घर पे, और टीजल जो है वो बताते हैं सरफेस ब्रदर को कि जिस बंदे को तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो, यानी जिसको चार्ल्स मिस्टर प्रीमियम समझ रहा है और जिसको जोसेफ मिस्टर स्टैनले समझ के घर से निकाल रहा है, वो इनफैक्ट उनका अंकल ओलिवर है। जोसेफ एक्सक्यूज़ करने की कोशिश करता है अपने बिहेवियर पे, और चार्ल्स सिर्फ उन पोर्ट्रेट्स की सेलिंग पे माफ़ी मांगता है। तो सर ओलिवर चार्ल्स को बताता है कि तुम्हें माफ़ कर दिया गया है, लेकिन जोसेफ को कहता है कि तुम्हारी हिपोक्रेसी सामने आ गई है। लेडी टीजल सजेस्ट करती है कि चार्ल्स जो है ये इसकी शादी हो जानी चाहिए मारिया से, और उस मारिया को चाहिए से माफ़ कर दे, लेकिन मारिया कहती है वो तो ऑलरेडी किसी और से एंगेज्ड है। चार्ल्स हैरान रह जाता है। सो लेडी स्नेवेल सामने आती है दूसरे रूम से और बताती है कि चार्ल्स की मंगनी उससे हो चुकी है, बट रोले जो है वो स्नेक को बुलाता है। तो स्नेक बता देता है कि उसको पैसे दिए गए थे कि वो नकली लेटर लिखे लेडी स्नेवेल की तरफ से, और उसने ये भी बताया कि मुझे रोले ने चूँकि ज़्यादा पैसे दिए तो मैंने इसको सच बता दिया। सो लेडी स्नेवेल गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। जोसेफ उसके पीछे चला जाता है क्योंकि उन दोनों का प्रोस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है हर तरह का। जोसेफ के हाथ से पैसे भी चले जाते हैं, जोसेफ के हाथ से जो मारिया का प्रोस्पेक्ट होता है वो भी निकल जाता है। लेडी टीजल ऑलरेडी उसके हाथों से निकल चुकी होती है, और जो स्नेयरवेल के भी मकासद कामयाब नहीं होते, स्नेक भी एक्सपोज हो जाता है। तो प्ले एंड्स विद एन एंगेजमेंट बिटवीन मारिया एंड चार्ल्स। उनकी आपस में मंगनी हो जाती है, जो कि अपने अंकल का अकेला वारिस बनता है। सो दिस इज़ बेसिकली अ प्ले जिसमें दिखाया गया है सोसाइटल करप्शन को, कि सोसाइटी में किस तरह डिसरप्शन है, करप्शन है, मॉरल वैल्यूज़ को वायलेट किया जाता है, किस तरह एडल्ट्री और जो रिलेशनशिप, फॉल्स रिलेशन, फेक रिलेशनशिप, अपीयरेंस, रियलिटी, लाइज, हिपोक्रेसी किस हद तक इम्यून कर चुकी है अपर क्लास में। सो उस अपर क्लास की एक लिविंग एग्जांपल ये प्ले है, जो कि कॉमेडी ऑफ मैनर में फॉल करता है और अपने टाइम की अरिस्टोक्रेटिक फैमिली को एक्सपोज कर रहा है एक सैटिरिकल कॉमेडी के ज़रिए।
सो आई होप आपको सारी समरी समझ आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड.